I proceed, let me quickly introduce myself. My name is Rajiv Garg and I am a data analytics trainer with 17 years of corporate experience in companies like Moody's, Intellinet, and IBM. And training is not only my profession, it is my passion. I love helping people grow their career in this awesome domain of data analytics. Okay, so I do conduct the modules for Tableau, Power BI, SQL, Mongo, etc. ठीक है जी, clear है? Correct. So we will be proceeding on with Tableau. This is the module for Tableau. मॉड्यूल जो है बहुत ज्यादा पावरफुल मॉड्यूल है. इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल मॉड्यूल और रियल टाइम प्रोस्पेक्टिव से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. ओके, सो आपके रियल टाइम में ये यूज होने वाला है. सो आई थिंक आपको लोगों को कुछ आइडिया है टैब्ल्यू के बारे में. यू हैव सम आइडिया अबाउट टैब्ल्यू? नथिंग. एक सेशन तो हो गया शायद, तो कुछ तो पता होगा. बताओ, व्हाट्स योर नेम? हाँ, भूषण कुमार. अच्छा भूषण जी, व्हाट यू नो अबाउट टैब्ल्यू? एनीथिंग बोलो. नथिंग. एनीबडी कैन से एनीथिंग अबाउट टैब्ल्यू? नथिंग. चलो कोई बात नहीं, आई विल टेल यू. Tableau is a very very powerful data visualization tool which help us to present the data in a visual format, right, with the help of images. Okay, so before I say anything else about Tableau, let me show you something. Right, so here you can see this is the data in front of you. Right, here is the data in front of you. This is a data of an online store of US. Right, this is the data of an online store of US containing the 10,000 records. 4 साल का इसमें data है ये. It contains the information about the order like order ID, order date, ship mode. It contains the information about the customer like customer name, the name of the customer. Every customer has a unique ID, the country, city, state, postal code, and region of the customer. These customers has been bifurcated into 3 segments, which is consumer, corporate, and home office. Okay, then we have the information about the product. We have the information about the product like the name of the product. Each product have a unique ID. In this data, we have 3 categories of products, which is furniture, office supplies, and technology. And these categories has been further subdivided into subcategories, which is there are total 17 subcategories. Subcategory means like if it is furniture, what in furniture? Table, chair, bookcase, etc. Okay. Then we have the sales value of the particular transaction, the quantity sold, the discount, and the profit. Okay. This is what we have. So we have 4 years data, 2014 to 2017, 10,000 records. To be specific, 9,994 records are there in this data. You must be working in Excel. Excel में आप लोगों ने काम किया होगा. Yes, no? हाँ जी. So if I ask you to give me the answers to few questions like which is the state which has given us the maximum sales? Which category or the subcategory is contributed more towards the sale? Which region or the segment is giving us more sales, etc. If I want the answers to these questions, can I give this in Excel? Yes or no? Yes, definitely we can give it in Excel, and the best way to create a chart in Excel is using a pivot, right? But let us see if we utilize Tableau for this, what type of output we can expect. And here it is. This is the output of that data, the visualization of that data using Tableau. Over here, the first visual, you can see a US map in front of you, which is displaying the state-wise bifurcation of the sales, the percentage contribution of each state in the sales, and the color is indicating the sales volume. Darker the color, more the sales, lighter the color, lesser the sales. Okay, so if you have a quick look on this, you can see that the California is the state which has given us the maximum sales. Correct? Then if we move further, here it goes. Now I can see the year-wise bifurcation of the sales.
I can see the year-wise bifurcation of the sales, the category and the year-wise bifurcation of the sales, in which you can see the continuous growth. Only in the year 2015, you can see there is a slight dip in technology and office supplies. Furniture is continuously growing. Moving further here, we can see the category-wise bifurcation of the sales, in which you can notice that the technology has given us the maximum sales. Moving further, you can see the subcategory wise bifurcation, where phone and chairs has contributed max towards the sales. Here we have the category and the region wise bifurcation of the sales, where we can see in all the three categories, which is technology, furniture, and office supplies, the maximum contribution, which is somewhere around 50%, is coming from the consumer sector, right? Then here we are having a region and the category wise bifurcation of the sales, and we can see in all the three categories, uh, the contribution of East and West is more prominent in comparison to the Central and South. Moving further, sorry, here it is. Moving further, here we can see a summarized data in which we have the state-wise sales, we have year-wise sales, category, subcategory sales, segment, region-wise bifurcation of the sales, and this is the total sales done. Out of the 10,000 records, the total sales done is 2297,000. Okay, and that's not all. Let's say if I want to talk about California, all my visuals are talking about California. The total sales of California is 457,000. Let's say I want to talk about Technology South. Here it is. All the visuals are talking about Technology South. The total sales is 148,000, where phones has given us the maximum sales. Clear? Clear? How do you find this visuals? कैसे लगे आपको ये visuals? हाँ? बढ़िया. क्या बढ़िया लगा आपको इसमें? What is good in this? नहीं काम आपको ये बताओ ना, अच्छा क्या लगा? चार्ट्स अच्छे लगे. आप क्या कह रहे हो? इंफॉर्मेटिव, दैट इज मोर सेंस. क्या आपको कुछ अच्छा लगा इसमें? क्या अच्छा लगा? ऑसम, इजिली अंडरस्टैंडेबल. सो तीन चीजें यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट हैं. नंबर वन, इजिली अंडरस्टैंडेबल. नंबर टू, प्रेजेंटेबल. एंड नंबर थ्री, डायनामिक. इट इज डायनामिक. आपको जो भी चाहिए, जो भी इसको देख रहा है, सपोज आप जो है आप टेक्नोलॉजी कैटेगरी को टेक केयर कर रहे हैं, यू आर ओनिंग दिस पर्टिकुलर, आपको टेक्नोलॉजी, आपने उस पर क्लिक किया, सारा कुछ टेक्नोलॉजी. सो दिस इज नोन एज इंटरैक्टिव. नाउ थिंक इफ यू हैव टू क्रिएट दिस थिंग इन एक्सेल. अगर आपको एक्सेल में ये बनाना हो, कैन वी डू सो? एग्जैक्टली सेम विल नॉट बी पॉसिबल. मैप वगैरह हम नहीं बना पाएंगे, और अगर ऐसा कुछ सिमिलर बनाए तो इसमें टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. So where this Tableau comes into the picture. Okay, are you getting it? ठीक है. So यहाँ पे Tableau आता है. तो ये हमारा जो इस मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव है, which is this. So whatever we will be learning is in this module, our final objective will be to achieve this. We will be able to create the visuals, something like this, and even better than this post completion of this module. Clear to all? Clear? ठीक है. गुड. राइट. सो अब जब हमें पता है कि हमें क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है इस मॉड्यूल से, सो लेट्स प्रोसीड ऑन विद Tableau. Okay, so as I said, Tableau is a very powerful data visualization tool which help us to transform the data from various sources to interactive dynamic visuals. Okay, then why do we need Tableau? Why Tableau? Number one, speed. Tableau provides a great speed. अगर हम एक्सेल की बात करें तो ऑन एन एवरेज हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट टेक्स टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल? कितना टाइम लगता है कि एक्सेल में चार्ट बनाने में? अप्रोक्सीमेटली, सॉरी, 2 मिनट. ओके, एनीबडी एल्स? अगर जो मैंने आपको डेटा दिखाया था उसी पे अगर आपको कोई चार्ट बनाना है तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट. चलिए हम मिनिमम वाला मान लेते हैं. आप चैंपियन हैं. आप, क्या नाम है आपका? विजय. अच्छा विजय जी, 2 मिनट में एक्सेल में बना लेते हैं. वेरी गुड. सो
No, it can be done. It is true. It is not that it cannot be done. It can be done, but you need to have good expertise. However, in Tableau सबसे complicated chart जो अगर आपको कोई Tableau में लगता है वो हम बना सकते हैं within less than a minute. Literally, I mean it. Less than a minute. It is just a matter of some practice. ठीक है जी, आप लोग सब बना पाएंगे. I will show you this thing. So number one is the speed. So अगर विजय जी के हिसाब से भी देखें तो आधे टाइम में हम वो काम कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, it is very much user friendly. No programming or technical skills are required to work in Tableau. Any person who can switch on the computer can work in Tableau. Clear? Eye catching and interactive dashboards. जो भी मैंने आपको दिखाया था, जब एक पेज पे आपने देखा था एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे विजुअल्स आ रहे थे, उसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड. तो जैसा कि आप लोगों ने कहा भी, दैट वाज इंटरैक्टिव, ठीक है, और आई कैचिंग भी था. तो दैट इज वाज आई कैचिंग एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड. डायरेक्ट कनेक्शन, दिस इज अनदर वंडरफुल फीचर ऑफ टैब्ल्यू. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोजिंगली आप रियल टाइम डेटा पे काम कर रहे हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमेजॉन. एवरी मिनट द डेटा इज चेंजिंग. ठीक है, अगर आप उस पे काम कर रहे हो एंड ओके ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, आप उस पे काम कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग सम विजुअल्स, इट हैज टेकन यू 2 hours टू क्रिएट दोज विजुअल. आपने बहुत सारे विजुअल बनाए, सब मिलाकर के आपको 2 घंटे लगे उसको बनाने में. अब ये बताओ कि जो आपका फाइनल आउटपुट आया, आपके विजुअल्स, क्या वो रियल टाइम पे डेटा पे बेस्ड होंगे या उस डेटा पे बेस्ड होंगे जब आपने शुरू किया था, 2 घंटे पुराना था जब हमने शुरू किया था? एब्सोल्युटली करेक्ट. सो जब हमने डेटा उठाया था उसके बेसिस पे ये होंगे. हाउएवर, नो मैटर अगर आपने 100 विजुअल्स भी बना रहे हैं, इवन इफ यू हैव क्रिएटेड 100 विजुअल, वन बटन क्लिक, you will click on a single button and all the visuals will be updated with the real time data. This is known as direct connection. Okay, next, easy publishing and sharing. Again, I will take an example of Excel. In Excel, if you have created a chart in Excel, ठीक है जी, आपने एक चार्ट बनाया है Excel में और आपने मुझे भेजा है, तो मुझे वो चार्ट देखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मैं अपने कंप्यूटर पर उसको देखना चाहता हूं तो मुझे कम से कम किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एब्सोल्युटली करेक्ट, मेरे पास Excel इंस्टॉल्ड होना चाहिए तभी मैं देख सकता हूं. हाउएवर, दिस इज नॉट द केस विद टैब्ल्यू. ओके, अगर आपने टैब्ल्यू में कुछ बनाया है और आपने मेरे साथ शेयर किया है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास टैब्ल्यू इंस्टॉल्ड हो. ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि मेरे पास मेरा लैपटॉप हो. दैट मीन्स आई कैन वेरी कंफर्टेबली व्यू इट ऑन माई टैबलेट और ऑन माई मोबाइल फोन. और जब हम बोलते हैं वेरी कंफर्टेबली, इसका मतलब है कि हमारा विजुअल जो है, इट विल बी डायनामिक विद रिस्पेक्ट टू द डिवाइस. आपने देखा होगा आजकल की वेबसाइट, दैट व्हेन यू ओपन सम वेबसाइट, लैपटॉप में थोड़ा अलग तरीके से खुलती है, मोबाइल या टैबलेट में अलग तरीके से. इसको बोलते हैं हम डायनामिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट. सो इसी तरीके से जो आप विजुअल बनाओगे वो भी रिस्पॉन्सिव होगा. वन टाइम आपके एफर्ट्स हैं, इट विल बी रिस्पॉन्सिव. ओके, and because of all these wonderful features, Tableau has a great growing market. Clear? Right. Any questions on this? Good. आगे चलते हैं. Tableau products, right? So the commercial version of Tableau is Tableau Desktop, जो कि आपको मार्केट में, इंडस्ट्री में यूज होता है. और Tableau शायद आप लोगों को पता हो, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है. It is a paid tool. Or the cost of Tableau Desktop is somewhere around $70. Absolutely. Have you paid that? कॉलेज की तरफ से लगा. Awesome. देखो, very good. Student license मिल गया आपको, है ना? Good. So it is around $70 per user per month. So अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए फुल फ्लेजेड वर्जन, तो आपको $70 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. चलिए, so here is but आपके $70 बचाते हैं ऐसे. ठीक है, so here it is, we have saved your $70 by providing you Tableau Public, and I should not say we, I should not take the credit of that, because
This is the tool provided by Tableau only. When it comes to the interface, when it comes to the visualization, is it 100% same like Tableau desktop? जो सारे के सारे विजुअल्स हम डेस्कटॉप में बना सकते हैं, वो सारे विजुअल हम पब्लिक में भी बना सकते हैं, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो बेसिकली टैब्ल्यू जो है पैसे नहीं लेना चाहता है स्टूडेंट्स. सो दैट इज व्हाई इट इज अ पब्लिक, इट इज अ लर्निंग. अब हाँ, अब वही आप कह रहे हो कि भैया जब सब कुछ पब्लिक में होता है तो डेस्कटॉप के लिए पैसे कौन देगा. ठीक है. सो पब्लिक में सब कुछ होता है, मगर आपको पता है डिफरेंस क्या है आपके पास, और क्या है. नहीं. एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है उसमें, जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, बट द मेन मेजर डिफरेंस इज दैट इज यू विल नॉट बी एबल टू सेव एनीथिंग इन टैब्ल्यू पब्लिक. आपने विजुअल बनाया, बंद किया, एवरीथिंग गॉन. दोबारा ओपन करो, दोबारा बना लो. प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. ठीक. सेव नहीं होगा. यू कैन नॉट सेव. अच्छा, मैं पूरा स्टेटमेंट बता देता हूं. यू कैन नॉट सेव इट एनीथिंग ऑन टू योर लोकल कंप्यूटर. जैसे आप एक्सेल में काम करते हो, वर्ड में काम करते हो, फाइल बनाई, अपनी सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, ठीक है ना. वो नहीं कर सकते हम यहाँ पे. एम आई करेक्ट? राइट. ठीक है जी. सो वी कैन नॉट. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड पब्लिक. ओके. राइट. एंड जहां पे टैब्ल्यू डेस्कटॉप की, सो हम ensure nobody will install Tableau desktop. I will give you the link. You will be installing Tableau public. आपके पास लाइसेंस वर्जन है, नो वरीज. ठीक है. सो आप लोगों को सबको पब्लिक ही इंस्टॉल करना है. व्हाई आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दिस, बिकॉज जितना हमें इस मॉड्यूल में पढ़ना है उसका 80% काम हम Tableau पब्लिक में कर सकते हैं, बट रिमेनिंग 20% हमें Tableau डेस्कटॉप चाहिएगा. और Tableau डेस्कटॉप का हमें फ्री ट्रायल वर्जन मिलता है 14 डेज के लिए. 14 डेज फ्री ट्रायल होता है, कमर्शियल फुल फ्लेजेड वर्जन. तो जब समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इसको इंस्टॉल करना है ट्रायल वर्जन को. ठीक है. सो देन द नेक्स्ट थिंग व्हिच कम्स अप ओवर हियर इज द Tableau ऑनलाइन. ठीक है. Tableau Online, it is a cloud platform of Tableau which is used to share your visualization with the respective audience. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मगर अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, दैट इज इट विल बी योर फुल फ्लेजेड वेबसाइट. Tableau आपको एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बना करके देगा, जिसका 100% एडमिन कंट्रोल के साथ हम बनाएंगे अपने इस मॉड्यूल में. ठीक है. 100% एडमिन कंट्रोल के साथ, जिसके थ्रू आप अपने विजुअल्स को ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते. क्लियर? राइट. सो दैट इज Tableau ऑनलाइन. Then we have something known as Tableau server. Now Tableau server is also same like Tableau online. Okay, Tableau server is also same like Tableau online. The only difference is it works on the local environment, right? No matter whatever security online has provided, supposingly an organization is not comfortable putting its data onto the cloud of Tableau. ओके. वो क्लाउड पे नहीं डालना चाहते, और ओनली विद इन द लोकल एनवायरमेंट वो विजुअलाइजेशन शेयर होना है. ठीक है. तो उस केस में Tableau सर्वर यूज होता है. डिफरेंस इतना ही है, ऑनलाइन क्लाउड पे चलता है, सर्वर लोकल एनवायरमेंट में चलता है. ये पॉइंट क्लियर है? यस. देन Tableau reader. Tableau reader, it is used to read the Tableau workbook. The extension of Tableau workbook is TWB. हाँ, TWB, Tableau workbook. एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेलएस. राइट. ठीक है ना. तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स लोग पूरा Tableau पढ़ लेते हैं, उनको एक्सटेंशन ही नहीं पता होता. इंटरव्यू में गए, बता दो एक्सटेंशन सर क्या नहीं. ठीक है. सो TWB याद रखना. सो दैट इज द Tableau रीडर. समझने की आप इसको एक्रोबैट रीडर से कंपेयर कर सकते हो. जिस तरह से एक्रोबैट रीडर पीडीएफ फाइल्स को पढ़ने के लिए यूज होता है, उसी तरह से Tableau रीडर Tableau वर्कबुक को पढ़ने के काम आता है. Then we also have something known as Tableau prep. Tableau prep, which is used for the transformation of the data, cleaning of the data. ठीक है. Within the Tableau, we do not have a facility of transformation. Tableau की सिर्फ एक डिमांड है कि मुझे डेटा ठीक देना.
You give the proper data to the Tableau, and then Tableau will do wonders for you. Okay, so these are the various product of Tableau. Let's talk about the installation of Tableau over here. So here is the link to install Tableau public. Right. So all this you will be getting all the reference material. ठीक है, आपको टैब्ल्यू से रिलेटेड जो भी है ये स्लाइड्स वगैरह, आई थिंक रिकॉर्डिंग, आई डोंट नो, वो भी आपको शायद मिल ही जाएगी, मिलेगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, और जितनी भी स्लाइड्स जो भी डेटा सेट में यूज करूंगा वो सब कुछ मिलेगा. सो डोंट वरी अबाउट द रेफरेंस मटेरियल. एंड हियर इट इज. सो एक छोटा सा फॉर्म है जो आपको यहाँ पे भरना है. Here it is. You can see the first name, last name. It says business email. ठीक है, कोई भी ईमेल आपका पर्सनल ईमेल आईडी भी चलेगा, जीमेल, याहू, कुछ भी चलेगा. कंट्री, डाउनलोड. Right, you just need to fill in the information, download the app. Once downloaded, simply double click on the downloaded file and the installation will start. Right, it will simply say you need to click on this install button. It will be automatically installed, and you might be prompted to restart your system, so you can restart. Okay, and once installed, you will be getting an icon of Tableau on your desktop, something like this. ठीक है जी. So इस पे double click करेंगे, and once you double click on this Tableau, here it is. So once you double click on the Tableau, this is the interface you will be getting. ठीक है, here it is. So Tableau public, here is the interface. Right now, the complete Tableau is a simple 3-step process. 3 काम करने हैं हमें सिर्फ. अगर ये 3 काम हमें आते हैं तो हमें Tableau आता है. नंबर 1, कनेक्ट टू द डेटा सोर्स. मतलब Tableau को बताना है कि वो डेटा कहाँ है जिसको हमें विजुअलाइज करना है. ओके. नंबर 2, चूज द डायमेंशन एंड मेजर. अब ये डायमेंशन मेजर क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट आप यहाँ पे सिंपल ये कह सकते हो कि हमें किस फील्ड्स पे काम करना है, कौन सी फील्ड्स के ऊपर काम करना है, वो हमें बताना है Tableau को. और तीसरी चीज, अप्लाई विजुअलाइजेशन टेक्निक, विच मीन्स किस तरह का विजुअल बनाना है ना. आपको पाई चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, किस तरह का विजुअल चाहिए. ठीक है, वो 3 काम करने हैं. सो लेट्स ट्राई टू डू इट प्रैक्टिकली. राइट, सो आई विल बी कनेक्टिंग टू द सेम डेटा सोर्स ओवर हियर. राइट, सो इस डेटा सोर्स में, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, इसमें 3 शीट्स हैं, ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल. ऑर्डर्स में ऑर्डर्स की पूरी डिटेल्स है. रिटर्न्स में ये ऑर्डर नंबर है जो रिटर्न हुए हैं. और पीपल में इट इज द नेम ऑफ द रीजनल हेड्स, यू कैन से. सो हम लोग मेजरली ऑर्डर्स वाली शीट के साथ काम करेंगे. सो आई कैन गो टू द Tableau, और ये वाला पेज जो है ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है. एंड Tableau में हम सिर्फ एक्सेल से ही कनेक्ट नहीं करते हैं. देयर आर मोर देन 50 डेटा सोर्सेज दैट वी कैन कनेक्ट टू. इस मॉड्यूल में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक्सेल से कनेक्ट हम काफी करेंगे, और मैं आपको लेटर पार्ट में बताऊंगा एसक्यूएल में भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एसक्यूएल कर रखा है आप लोगों ने. अच्छा, वो है आपके मॉड्यूल में. अच्छा ठीक है जी. सो मैंने 2 ये चूज इसलिए किए हैं कि ये सबसे ज्यादा रियल टाइम में सबसे ज्यादा कॉमन है. 90% केसेस या तो एक्सेल या सीक्वल, यहां से आपके पास डेटा आने वाला है. ठीक है, सो हमने यहाँ पे बोला कनेक्ट टू एक्सेल. देन वी नीड टू सर्च फॉर द डेटा सोर्स. किससे कनेक्ट करना है? हमारे डेटा सोर्स का नाम है ऑर्डर्स. हियर इट इज. से ओपन. ओके, सो कैन यू सी ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न, द 3 वर्कशीट्स. यहाँ पे हम इनको टेबल बोल रहे हैं. ठीक है, अब हम इनको टेबल बोल रहे हैं. सो Tableau में एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके हैं. सो लेट्स से आई वांटेड टू वर्क विद ऑर्डर्स. सो आइदर यू कैन डू द ड्रैग एंड ड्रॉप. सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे. You got the data? Let me throw it out. Or you can do the simple double click.
यू आर गेटिंग द, चाहे डबल क्लिक कर लो, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, यू आर गेटिंग द डेटा। ओके, सो ये वाला जो पेज है, ये फर्स्ट पेज, इसका काम सिर्फ इतना ही है, ये हमारा वर्क एरिया नहीं है। यहाँ पे वी कैन कनेक्ट टू द डेटा सोर्स एंड वी कैन हैव अ लुक एट द डेटा। ठीक है, अब जिस तरह से एक्सेल में आपको वर्कशीट मिलती है, सिमिलरली हेयर आल्सो यू गेट द वर्कशीट एंड दिस इज योर वर्क एरिया। ओके, वेयर द व्हाइट एरिया विच यू सी ओवर हेयर, दिस इज योर चार्ट और द प्लॉट एरिया, जहां पे हम अपना विजुअल बनाएंगे। देन ये छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हो, विद हेडिंग, मार्क्स, फिल्टर, पेजेस, कॉलम, रोज, इनको हम बोलते हैं कार्ड। क्या बोलते हैं? कार्ड, जस्ट लाइक विजिटिंग कार्ड्स, दीज आर नोन एज कार्ड्स। ठीक है, अब ये कॉलम्स और रोज के आगे आपको दो बड़े बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं, करेक्ट? दीज बॉक्सेस आर रेफर टू एज शेल्फ, जस्ट लाइक बुक शेल्फ। ठीक है, then on the left hand side you will see what are these, can anybody tell me? Category, city, country, customer ID, discount, profit, sales, ये सब क्या है? Columns from the data source। ठीक है, column from the data source, columns बोल सकते हो, fields बोल सकते हो, करेक्ट? बट यहां पे ना तो हम इनको columns बोलते हैं और ना fields बोलते हैं, we call them as dimension and measures। ठीक है, बट हमें हमें नहीं देखना है कि कौन सा डायमेंशन है, कौन सा मेजर है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। Tableau is smart enough to identify that what will be the dimension and what will be the measure। Okay, how? So all the fields on the basis of which the calculation is probable will be considered as measure, and where there is a no probability of calculation will be considered as the dimension। जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन, इनके ऊपर कोई कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। सो इट विल बी, क्या बोलेंगे इनको? डायमेंशन। सिमिलरली डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, यहां पे हो सकता है एडिशन वगैरह हो सकता है, सम वगैरह कर सकते हैं हम। सो इट विल बी अ मेजर। और अभी के लिए आप ये भी नोटिस कर सकते हो, यहां पे आप देख रहे हो, व्हेन आई एम मूविंग माय पॉइंटर ऑन दिस, कैन यू सी इट इज गेटिंग हाईलाइटेड इन ब्लू, और व्हेन आई एम moving this, it is highlighting in green। So whatever is getting highlighted in blue, as of now you can say that it is a dimension, and what is highlighted in green, it is a measure। Simple, right? So हमने step number 1 किया है, connect to the data source। Step number 2, choose the dimension and measure, which means tell Tableau which are the fields on which you want it to work। Okay, so let's say I want to display the sales on the basis of the subcategory। I simply double click on the sales and double click on the subcategory, my visual is ready। 2 clicks, the visual is ready। Simple enough। ठीक है, दोबारा करते हैं। I want to display the sales on the basis of the subcategory, the visual is ready। 2 क्लिक किए, visual बन गया, 1 मिनट तो नहीं लगा, है ना? So here it is, step number 2, choose the dimension and measure। Step number 3 क्या था? स्टेप नंबर 3 क्या था? अप्लाई विजुअलाइजेशन टेक्निक, करेक्ट? अब बताओ, मैंने बताया टैब्ल्यू को कि बार चार्ट बनाना है, क्या मैंने बताया इसको? नहीं बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट मी टेक द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर डेट। क्या मिला हमें? लाइन चार्ट। मैंने बोला टैब्ल्यू को लाइन चार्ट बनाने के लिए? नहीं, राइट? सो दैट मीन्स हमें थर्ड स्टेप भी नहीं करना। Tableau is smart enough to give you the best possible visual depending on the dimension and measure you have selected। Understood? बात समझ में आती है? Are you getting it? Yes? ठीक है। So it will automatically give it। Now let's take one more thing। Once, okay, I am taking the sales on the basis of the subcategory, we are getting a bar chart। So आप पूरे मॉड्यूल में देखोगे कि Tableau बहुत सारी चीज अपने आप कर देता है, but it will give you a full leverage to change it as per your requirement। So let's say बार दिया है, मुझे इसको लाइन बनाना है, लाइन चार्ट बन गया।
ठीक है जी, दोबारा देखते हैं। लेट मी टेक द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर डेट, इसने लाइन किया है, मुझे तो इसको बार बनाना है, बार बन गया। ठीक है, ये रहा। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करते हैं, दोबारा से लेते हैं। सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, कैसा विजुअल मिला हमें? बार चार्ट। लेट्स डू इट द सेम थिंग वंस अगेन। सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, व्हाट आर वी गेटिंग? टैबुलर डेटा। टैबुलर डेटा मिल रहा है। पहले इसने क्या दिया था? बार चार्ट। अब ये कैसे हुआ? इज इट सीक्वेंशियल वन बाय वन, कि एक बार बार चार्ट देगा, एक बार वो हमें टैबुलर देगा? दोबारा करके देखते हैं क्या आना चाहिए। लेट मी टेक द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, दोबारा से टैबुलर आ रहा है, इसका मतलब सीक्वेंशियल तो नहीं है। फिर से एक बार करके देखते हैं क्या आता है। लेट्स टेक द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, हमारे पास सबके बार चार्ट आ रहा है। एनीबॉडी गेस हाउ इट इज हैपनिंग? Perfect answer. Very good. So it is the thumb rule in Tableau. Dimension plus measure is equal to tabular and measure plus dimension is equal to graphical. अगर आप पहले measure लोगे फिर dimension select करोगे तो आपको graphical visual मिलेगा। पहले dimension लोगे फिर measure दोगे तो आपको tabular data। ठीक है जी? Here it is. So यहाँ पे we have just focused on these three steps. Connect to the data source, choose the dimension and measure, and apply visualization technique. Okay. Now talking about the sample data. So ये data मैंने आपको दिखाया था जो हम use कर रहे हैं. This is not my data. This is the sample data provided by Tableau. और जब Tableau आपको कुछ provide कराता है, documents folder के अंदर जब आप Tableau इंस्टॉल करोगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा My Tableau Repository. ठीक है, और उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा डेटा सोर्सेस, और यहाँ पे आपको वो डेटा मिलेगा जिसका नाम होगा सुपर स्टोर, सैंपल सुपर स्टोर। राइट, जब आप इंस्टॉल करोगे टैब्ल्यू तो आपको यहाँ पे वो मिलेगा। बाय डिफॉल्ट टैब्ल्यू आपको इस लोकेशन पे देगा, आप जहां चाहे रख सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में उसको डी ड्राइव में डाल रखा है और इसका नाम कर रखा है ऑर्डर्स। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, मगर टैब्ल्यू देगा तो वहां पे देगा। बट अभी जब आप टैब्ल्यू पब्लिक इंस्टॉल करोगे तो आपको ये डेटा नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज यू आर इंस्टॉलिंग पब्लिक। सो आपको ये डेटा हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एज पर द प्रोसेस, जस्ट आफ्टर द सेशन आई विल शेयर ऑल दिस मटेरियल विद द एडमिन टीम एंड एडमिन टीम विल शेयर इट विद यू। क्लियर है? तो अगर कभी भी किसी रेफरेंस मटेरियल में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरी क्लास का वेट मत करना, एडमिन टीम से कनेक्ट करना। चलो, तो ये हो गया सैंपल डेटा। नाउ Tableau and Excel a comparison. Let's try to compare Excel and Tableau. तो Excel में चलते हैं, and let's say I wanted to create a visual over here. So let's say हमें Excel में एक visual बनाना है which should display the sales on the basis of the category and subcategory. बना सकते हैं Excel में, बना सकते हैं। I want to create a visual in Excel to display the sales on the basis of category and subcategory. Can be done. बिल्कुल बना सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका क्या है? पिवट के थ्रू। So I will like to display the sales on the basis of the category and the subcategory. I can click on this drop down, field value settings. I will make it as sum. I can go to the number format, number, no decimals. Okay, okay. And I can go to the insert, and let's take any of the visual over here. Let me take this. I can resize the visual. ठीक है जी, बन गया। इसको और हम अच्छा कर सकते हैं, कलर वलर डाल देंगे, कर सकते हैं, लेबल वेबल लगा देंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हम कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, बिकॉज हमारा फोकस टैब्ल्यू पे है। अब यही सेम काम हम टैब्ल्यू में करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें? I want to display the sales on the basis of the category and the subcategory. Okay, so let me double click on the sales on the basis of the category and the subcategory, putting the category into the color. Let's make it as an entire view, sorting, labeling. I can go to the category and show filter, and here it goes, the visual is ready.
ठीक है, द विजुअल इज रेडी। क्या 1 मिनट लगा? नहीं लगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज नॉट ओनली रेडी बट इट इज इंटरैक्टिव। आप रियल टाइम में देख सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हैं। इट इज अ डायनामिक विजुअल, करेक्ट? ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ना बहुत जल्दी जल्दी किया है। बोलने वाले थे ना, देखो मैं मन की भी सुन लेता हूँ। ठीक है, हिडन टैलेंट। सो दोबारा से करते हैं और बहुत स्लो स्लो करेंगे और देखना 1 मिनट लगा कि नहीं। मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने 7 to 8 क्लिक्स किए हैं, सिंपल। राइट, सो लेट मी डू इट वंस अगेन। 10। हाँ सर, वो तो आप चैंपियन हो, पता लगे। जब आप एक्सेल का 2 मिनट में बनाओगे तो इसमें तो आप वंडर्स कर सकते हैं। तो 2 क्लिक है, क्लिक क्लिक हो गया। राइट राइट राइट, ठीक है ना। तो थोड़ा सुंदर भी तो दिखाना है ना। राइट, सो काउंट करते हैं। नंबर 1, आई डबल क्लिक ऑन द सेल्स। नंबर 2, आई डबल क्लिक ऑन द कैटेगरी। नंबर 3, आई डबल क्लिक ऑन द सब कैटेगरी। Number 4, I took this category and put it into the color. Number 5, I make it as an entire view. Number 6, I did the sorting. Number 7, I displayed the label. And to make it interactive, number 8, I clicked on the drop down arrow of the category and say show filter. And here it goes. It is ready. And you can see when I have done it very slowly also, it has not taken a minute. Right? नाउ यू आर थिंकिंग कि सर आप तो कर रहे हैं जल्दी जल्दी, हम कैसे करेंगे? फिर बंद हो गया ये बड़ा मुश्किल करेगा भैया। कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम इसका भी कुछ ऑल्टरनेटिव निकालेंगे। कम अगेन। अच्छा, फिर रिमोट से? ये रिमोट आपको दे दूं मैं, ये लो। कभी बंद हो जाए तो आप ही चला लेना। चलिए कोई बात नहीं। राइट, सो सिंपल इनफ, इजी है, डूइंग इज वेरी इजी। ओके, so this was the comparison. Please, I need your focus. This was the comparison of Tableau and Excel. So I think needless to ask which one is better. कौन सा विजुअल बेटर था, किसमें कम टाइम लगा, और किसकी क्वालिटी बेटर थी। ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। नाउ कमिंग अप टू द कनेक्शन। So another wonderful feature over here is the live and the extract connection. So Tableau में पहला काम क्या करते हैं हम, connecting to the data source. Now this connection can be of two type, which is a live and a extract connection. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है। जो डेटा है जिसको आप विजुलाइज कर रहे हो वो कहाँ है, आपके रिमोट सर्वर पे है। आपके लैपटॉप पे तो है नहीं, वो तो कंपनी के सर्वर पे रखा हुआ है। अब आप उससे कनेक्ट हो रखे हो और आप विजुलाइजेशंस बना रहे हो। ओके, कैन यू थिंक, कैन यू विजुलाइज व्हाट आई एम सेइंग? कनेक्टेड टू अ रिमोट सर्वर डूइंग द विजुलाइजेशन ऑन योर कंप्यूटर। ओके, ये आप कर रहे हो। नाउ इट इज योर लॉग आउट टाइम, आपको घर जाना है। मगर जो काम आप कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जैसे ही आप लॉग आउट करोगे तो आप सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा का पूरा डेटा सर्वर का अपने लैपटॉप पे ले जाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उस समय में क्या कर सकते हैं, टैब्लू में हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट का। राइट, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट इन टैब्लू। बाय क्लिक ऑफ अ सिंगल बटन यू कैन टेक एन एक्सट्रैक्ट। Right, you can take an extract. Extract is the saved subset of the data. Please note, I have not used the word copy, I have used the word subset. Subset means the original data may be having thousands of records, but a subset may be having few hundred or even lesser number of records. छोटा सा part, ठीक है। So you can take an extract on your computer, you can go home, you can continue with the visualization. Next day when you come back, you can again connect to the live connection, and all the changes which has been done in the data source from the time when you have taken the extract to the time you are live again will be reflected in your visual. One click. Understood? So this is the live and the extract connection. Now, how do you do that? So here it is. You will be going to the data source page, and on the top over here, you can see there are two buttons, which is a live and a extract connection.
You just need to click on these button to switch between a live and an extract connection. Right now you are wondering where are the buttons. So let me show you the buttons. Here are the buttons. Can you see the live and the extract? So you can just click on this button and you can get an extract on your computer, right? But the buttons are not available over here. Why? Right, absolutely correct. Why? Because we are working in Tableau public, and this is the second difference between desktop and public, that in public we only work on a extract. We cannot work on a live connection in public. Okay, clear point? So two differences you have got so far. Okay, so this was the live and the extract connection. And also remember the extract which will be created. So इसको ऐसा नहीं, मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है कि एक्चुअल फाइल में मान लेते हैं 1000 रिकॉर्ड्स थे, आपने एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें 10 रिकॉर्ड आए, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। सो ये आप 10 रिकॉर्ड 15 रिकॉर्ड आप ये देख नहीं सकते। वो जो एक्सट्रैक्ट बनेगा वो सिर्फ टैब्ल्यू ही यूज कर सकता है, आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते। और जो एक्सट्रैक्ट वाली फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होता है डॉट हाइपर, HYPER। याद रखना है इसको, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट का एक्सटेंशन डॉट हाइपर, हाइपर मार्केट से याद कर सकते हो, हाइपर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, ये आपके सामने स्क्रीन है, पूरा विजुअल है आपके सामने। इस पेज को देख के, शीट को देख करके, हाउ कैन यू टेल दैट वेदर वी आर वर्किंग ऑन एन एक्सट्रैक्ट और अ लाइव कनेक्ट? हमें कैसे पता लग सकता है इसको देख करके? क्या नहीं हो रहा? नहीं नहीं, अच्छा वो तो चेंज होगा, उसके लिए हमें एक बटन पे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे होगा नहीं। अगर मगर मेरा कहना है बिना कुछ किए सिर्फ देख करके मुझे कैसे पता लगेगा कि हम लाइव कनेक्शन में हैं कि एक्सट्रैक्ट में हैं? सो उसका आंसर है ये, यहाँ पे नाम दिख रहा है, ऑर्डर्स, डेटा सोर्स का नाम दिख रहा है। अब इसके साइड में आप देखो छोटा सा आइकन दिख रहा है, दिख रहा है? आप लोगों को फोकस कर पा रहे हो इस पे? अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो सिलेंडर हैं, दिख रहे हैं? दो सिलेंडर, दो सिलेंडर का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। और जब आप लाइव में काम करोगे यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर मिलेगा। ओके, सो हियर इट इज। सो दिस इज द आइकन ऑफ अ लाइव एंड दिस इज एन आइकन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टैब्ल्यू डेटा टाइप्स, ठीक है। ऑल्दो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द डेटा टाइप, टैब्ल्यू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द डेटा टाइप। सो here it is. You can see the name of the columns, row ID, order date, ship date, etc. And on top of the columns, you can see some small icons. Yes, these icon indicates the data type, where hash indicates a numeric data type, ABC indicates a text data type, a calendar indicates a date data type. Further, you can see a globe symbol which indicates a geographic data type, and geographic data type is the data type which contains the data which has some longitude latitude value, which has some longitude latitude value like country, city, state, postal code, etc. ठीक है, सो ये we use this to create maps in Tableau. तो आगे इनके बारे में बात करेंगे। Apart from this, we also have a boolean data type which contains the data true false. So अभी हमारे डेटा में कोई boolean data type नहीं है, further we will be creating it. Okay, then we have a date time data type. अगर डेट के साथ आपके पास टाइम भी है, like 2nd of October 10:40 AM, right? इस तरह का डेटा होता है, so that is a date time data. अभी नहीं है हमारे पास। चलिए आगे बात करते हैं viewing of the data. सो ये वाली जो हमारी शीट है जहां पे आपको नीचे डेटा दिख रहा है, सो दिस इज फॉर द व्यूइंग पर्पस। अब टैब्ल्यू डज नॉट वांट कि अगर आपको डेटा देखना है तो आपको डेटा सोर्स में जाना पड़े। ओके, यू कैन सी द डेटा ओवर हेयर ओनली। एंड यहां पे हमारे डेटा में कितने रिकॉर्ड्स हैं जो ओरिजिनल डेटा है? कितने हैं? बहुत ज्यादा। कितने? अभी बताया था मैंने।
9,994 अप्रॉक्स 10,000 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, मगर यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? यू आर गेटिंग ओनली 100 रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी 100 दिख रहे हैं। सो टैब्ल्यू में ये आप यहाँ पे 100 दिख रहे हो, 1000, 10,000, या अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक देखना है, मेरे को सिर्फ 5 देखने हैं, तो आई कैन टाइप इन ओवर हियर एंड प्रेस एंटर। आई एम गेटिंग ओनली 5 रिकॉर्ड्स। बट आपका जो विजुअलाइजेशन है, it will always be based on all 10,000 records। इसीलिए हमेशा याद रखना, टैब्लू में भी कभी भी हम इंपोर्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम डेटा टैब्लू में इंपोर्ट करते हैं, नहीं, वो गलत है, एकदम गलत। हम टैब्लू में डेटा से कनेक्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दिखने के लिए कितने भी रिकॉर्ड्स दिखें, मगर आपका विजुअल हमेशा सारे डेटा को कंसीडर करेगा। ओके राइट, अभी हम सिर्फ 5 रिकॉर्ड, सो ये सिर्फ आपके देखने के लिए है, यहां से देख सकते हैं। या इफ यू मूव योर पॉइंटर ऑन दिस नेम ऑफ द टेबल्स, कैन यू सी अ स्मॉल बटन इज अपीयरिंग, दिस इज अ व्यू डेटा बटन, इस पे क्लिक करो, यू आर गेटिंग ऑल द 10,000 रिकॉर्ड। आपको कम देखने हैं, कम बता दो भाई, यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स, इट इज ओनली फॉर द व्यूइंग पर, viewing of the data, viewing the specific number of record to hide a particular column। अब टैब्ल्यू कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कॉलम है, अभी हमारे पास 21 कॉलम्स हैं इस डेटा के अंदर। नाउ टैब्ल्यू इज सेइंग दैट इफ सम पर्टिकुलर कॉलम इज देयर जो हमको विजुअलाइजेशन में नहीं चाहिए, जैसे कि कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी, मेरे को इसकी विजुअलाइजेशन में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट इज सजेस्टिंग कि इसको हम हाइड कर दें। ठीक है, सो दैट जो फील्ड्स को ढूंढना आसान हो जाएगा। करेक्ट, so I can just click on this drop down arrow. You see when I'm moving my pointer, I am getting a drop down arrow. I will click on this drop down arrow and say hide। ठीक है, alternatively you can also right click on the column name and say hide, कैसे भी कर लो। अब आप जब sheet 1 में जाओगे, so over here you can see customer ID and name is not available। ठीक है, वो hidden हो गए, तो हमें जो चाहिए वही रखें, जो नहीं चाहिए उन्हें हटा दो। अगर वापस चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स बटन ओवर हियर, ये एक सेटिंग्स बटन है विच से शो हिडन फील्ड्स। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी कस्टमर आईडी नेम आपको दोबारा दिख रहे हैं, मगर अभी ग्रेड आउट है। यू विल गो टू द शीट 1, तो अभी भी आपको ये दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी भी हिडन है। सो अगर आपको चाहिए तो उसको आप अनहाइड करेंगे, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो, से अनहाइड, और यू कैन राइट क्लिक ओवर हियर एंड से अनहाइड, जो आपको अच्छा लगे। एंड यू कैन गो टू द शीट 1 and the customer ID and name is back over। So this is hiding and unhiding a field। Okay, okay, next, renaming a particular column। So over here, if you want, you can rename a particular column, let's say order ID। I can click on this drop down arrow and say order number, enter, it has been changed over here, order number। You can change it any number of time, let me say rename order number। Clear, it has been changed over here, yes, right। Remember, whatever changes we are doing in Tableau, it is only for Tableau purpose, it will never impact your data source, but whatever the changes done in the data source will always be reflected in Tableau। So one way communication है, Tableau से कभी भी कुछ भी डेटा सोर्स पे नहीं जाएगा, मगर डेटा सोर्स में जो कुछ भी होगा वो हमेशा Tableau में आएगा। बात समझ में आई? So at any point of time, if you want to get the original name back, so you can click on this drop down and you see there is an option called reset name। Just click on this and you are getting the original name back over here। Feeling cold? अच्छा, ठीक है, हाँ, थोड़ा शांति भी हो गई।
Okay, right. Similarly, although it is not required, but if you want, you can copy it. You can select the column. You can say copy values if you want to put it somewhere else. You can paste it, copy paste if required. Here it is. And now comes your first assignment. ठीक है? So इस module में you will be getting lot of assignments, and doing of assignment is very important. ठीक है? So, but before I talk about the assignment, let me get you introduced to this toolbar. ठीक है? Because assignment करने के लिए आपको एक toolbar की जरूरत पड़ेगी, जिसमें the first icon which you see, it is a presentation mode button. It will take your visual to the entire screen, and the shortcut is F7. F7. It will take it to the entire screen. Next, now the next button which you see over here, it is the managing the card. Show hide card button over here. So these are known as card. You can click on this drop down arrow. Let's say I don't want the marks card. I don't want the filters. I don't want the pages. So you can keep the one which are required, and you can remove the one which are not required. It is only managing the space. ठीक है? आपको वापस चाहिए, so you can add them. I want the pages, I want the filters, I want the marks, so I'm getting it. Next, the next which comes up over here, this box is referred to is, this is a drop down box which is referred to as a fit box. Okay, it is referred to as a fit box. And remember, whenever you will be creating any visual, the fit will be standard. ठीक है? अब देखते हैं इसमें क्या होता है. So focus on this visual. As of now, my visual is not utilizing the entire screen area, and this screen area is lying vacant. Okay. Let me remove office supplies. Let me remove furniture. So मेरा visual screen के कोने की space ले रहा है, इतनी सारी space खाली पड़ी है. ठीक है? ये default behavior है Tableau का. But so from the day one, you will always remember that you need to take it as entire view. आप हमेशा entire view ही लेंगे. अब देखिए, now it will take the entire screen area. Let's say I don't want furniture. I don't want office plan. No matter how much data needs to be displayed, but the visual will always be utilizing the entire screen area. ठीक है? जब तक आपने कोई ऐसा विजुअल नहीं बनाया जो एक पेज पे एडजस्ट नहीं हो सकता, यू हैव टू ऑलवेज यूज द एंटायर व्यू. ठीक है? डे वन से इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको यूज टू हो जाएंगे उसके, बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं. ठीक है? नेक्स्ट, द नेक्स्ट आइकन, दिस पिन आइकन इज अ फिक्स एक्सिस बटन. ओके, दिस इज द फिक्स एक्सिस बटन ओवर हेयर. अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक एक्सिस है, कहां तक जा रही है? 350, राइट? 350 जा रही है ना? अरे बोलो भाई, मुझे स्क्रीन थोड़ी ना दिख रही. ठीक है. सो लेट मी रिमूव टेक्नोलॉजी, लेट मी रिमूव फर्नीचर. कहां तक जा रही है स्क्रीन? 240 तक जा रही है. ठीक है? सो हमने क्या नोटिस किया, स्क्रीन बाय डिफॉल्ट जो हमारी ये एक्सिस है वो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होती है. ठीक है? सो डिपेंडिंग ऑन द डेटा इट विल बी डायनेमिक. बट सपोज देर इज अ रिक्वायरमेंट कि मेरे को डायनेमिक नहीं करनी, इसको फिक्स करना है, सो वी कैन क्लिक ऑन दिस फिक्स एक्सिस बटन. अब आप इसमें ऐड करो, फर्नीचर ऐड करो, टेक्नोलॉजी ऐड करो, कुछ भी करो, ये 240 ही रहेगी. ये हमने फिक्स कर दी, ये डायनेमिक नहीं होगी. सो इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब कई बार हमारे डेटा के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है. सपोज एक बार तो जा रही है 1000 और एक जा रही है 100, तो बहुत वो छोटी सी बन जाएगी. तो उसके लिए हम इसको फिक्स कर सकते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है? ओके, द नेक्स्ट आइकन, टी सिंबल. Okay, the next icon is a quick label icon. Okay, it is the quick label icons. So if you want to get the quick labels, here it is. Can you see the quick labels? This is the quick label button. Next, you can see this is a group icon.
It will be covered in a separate topic. Then this is a highlighter. Again, we will be covering it in a separate topic. Then the next two buttons are the sort button, ascending, descending, sorting. The next button which comes up over here is the swap or the transpose button. Right? Now focus over here. Focus on the column and rows. What is there in the columns? Columns में अभी क्या है? Category, subcategory. और rows में क्या है? Sales. Transpose करेंगे. Rows becomes the column, column becomes the rows. Can you see? जो कॉलम में है वो रो में चला जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा. करेक्ट? एंड उसके इंपैक्ट से दिस विजुअल इज चेंजिंग फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल. ओके. Okay, the next button which you see is a clear all button. सब कुछ जो भी आपने बनाया, it will be deleted. It will be a fresh sheet. Clear all, right? And over here, this is a undo. If you don't want to do so, this is a undo button. If you again want to do so, it is a redo button. Undo, redo. Okay. Then the next button we have is a duplicate button. If you wanted to create another copy of the worksheet, you can just click on this and you are getting a duplicate of the visual. Now, what is the benefit of creating a duplicate? The benefit is, let's say I wanted to create the similar visual with some other field. Let's say profit. So let me take the profit over here and throw out the sales. So you can see 2 clicks and I'm getting what I am looking for. So अभी तो हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ, काफी चीजें हम फॉर्मेटिंग वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं. So हमारे एफर्ट्स काफी बच जाते हैं कि अगर हमें उसी तरीके का विजुअल दोबारा चाहिए किसी और फील्ड के लिए, so उसको डुप्लीकेट करके हम कर सकते हैं. Okay. Then the next button which you see over here, this is a new sheet button. You can just click on this and you are getting a new sheet over here. आप इस बटन से न्यू शीट ला सकते हैं. और एट द बॉटम यू कैन सी देयर इज अ फर्स्ट आइकन व्हिच यू सी. दिस इज आल्सो अ न्यू शीट बटन एंड द शॉर्टकट इज कंट्रोल एम. तीनों में से जो अच्छा लगता है वो यूज करो. ठीक है. देन द नेक्स्ट बटन व्हिच यू सी इज अ न्यू सोर्स बटन. You can click on this and you can add another data source. अभी हम लोग सिर्फ एक ही डेटा सोर्स के साथ काम कर रहे हैं. Further, we will see that how can we work with the multiple data sources. We will see that also. Okay. Then here is the save button. Normally क्या होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कहीं पे भी जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हम फाइल का नाम देते हैं, लोकेशन बताते हैं और सेव हो जाता है. बट यहाँ पे लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सेव बटन. टैबल्यू पब्लिक साइन इन. सो ये मुझे टैबल्यू पब्लिक में लॉग इन करने के लिए कह रहा है. नाउ व्हाट इज दिस टैबल्यू पब्लिक साइन इन? अब आपको पता है हम पब्लिक में काम कर रहे हैं, सेव तो कर नहीं सकते. सो एज अ हेल्पिंग हैंड टैबल्यू ने क्या किया है, टैबल्यू कह रहा है कि आप अपने लोकेशन पे तो सेव कर नहीं सकते, अगर आप चाहो तो मेरे क्लाउड पे आपको थोड़ी सी जगह दे देता हूं, वहां पे अपने आप फोल्डर बना लो और उसमें अपना डेटा सेव कर लो. सो पर्पस सिर्फ एक है कि हम अपना डेटा वहां पे सेव कर पाए. ठीक है. तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो सो यू कैन से क्रिएट एन अकाउंट. यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे. यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड यू विल बी एबल टू डू इट. राइट. आई एम नॉट डूइंग इट एज ऑफ नाउ. मैं नहीं कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि मैं बात करूंगा टैबल्यू ऑनलाइन की जहां पे हमें पूरी वेबसाइट मिलने वाली है. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. इफ यू फील लाइक अकाउंट बनाना है बनाओ, आपको लगता है नहीं बनाना मत बनाओ. ठीक है. इट इज टोटली अप टू यू, योर विश. Okay, then here you can see the first icon. It will take you to the home page जहां से हमने डेटा से कनेक्ट किया था. You click on this, you will again go back to the your worksheet. And on the extreme right hand side, you can see there is one show me button. दिख रहा है? Here it is. So यहाँ पे you are getting the shortcuts to create some of the visual. कुछ विजुअल्स बनाने का शॉर्टकट है यहाँ पे. ठीक है. बट अभी हम इनमें से कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे. हम ये सारे विजुअल्स बनाएंगे मगर मैन्युअली, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट यूजिंग द शॉर्टकट व्हेन द टाइम विल कम.
ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में कोई भी शॉर्टकट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, here it is. So this was the introduction towards the toolbar, and now comes your assignment. Question number 1, create a graph to display category and subcategory wise sales. अभी बनाया ही था हम लोगों ने, ठीक है, बन जाएगा। This one, answer already there with you. Next, category, region and subcategory wise profit. ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दें। कैटेगरी, रीजन, सब कैटेगरी, प्रॉफिट, असाइनमेंट डन। 4 क्लिक, इतना सही असाइनमेंट है। एक सेकंड ठीक है जी। सो हियर इट इज। और यहां पे क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देता हूं, पहला असाइनमेंट है इसलिए आउटपुट दिया है ये कि ऐसा ऐसा आउटपुट चाहिए। हर असाइनमेंट में एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको आउटपुट देने वाला हूं, ठीक है। एंड सेकेंडली यहां पे सिर्फ दिखाने के लिए एक साथ दोनों विजुअल रखे हैं हमने। टैब्लू में एक वर्कशीट में एक ही विजुअल बनता है। वी कैन नॉट हैव मल्टीपल विजुअल ऑन द सेम पेज इन टैब्लू। इज दैट क्लियर? क्लियर है? कोई शक सवाल? नहीं, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next topic which is coming up over here is the sorting of the column. Sorting means in a arranging. Now here it is. Now just focus on the column, row ID, order date, ship mode, etc. ठीक है? So why it is coming in this particular order? Why the order ID is before the ship date? Why the ship mode is after the ship date? कोई बता सकता है ये सीक्वेंस क्यों है? कैसे बना ये सीक्वेंस? हाँ? हाउ द सीक्वेंस, ये ऑर्डर आईडी पहले क्यों आ रहा है, ऑर्डर डेट पहले क्यों नहीं आया? Based on the Excel. Very good, I'm getting an answer. Absolutely correct, right? So that means the online is also attentive, right? Hello, can I get your name please? Who answered the question? Sandeep here. Sandeep, Yeah. nice to see your attention. Good, Sandeep. Thank you. Welcome. So absolutely, it is following the data source, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट। सो बाय डिफॉल्ट ये डेटा सोर्स ऑर्डर को फॉलो करता है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज फॉर द व्यूइंग पर्पस, यहां पे हम देखने के लिए। सो एज पर आवर कन्वीनियंस अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। सो आई कैन क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स बटन एंड यू कैन सी असेंडिंग, डिसेंडिंग। हियर इट इज। Now it has been category, city, country, customer ID, etc., or ascending or descending, right? It is only for the viewing purpose and it will have no impact on your visual. The visual will remain as it is. ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ज्यादा सिंपल सा लगेगा। विजुअल ऐसा ही रहेगा, विजुअल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम डेटा को देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप दो और ऑप्शन देख रहे हो, देयर आर टू मोर ऑप्शंस व्हिच आर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पर टेबल। एंड में दिख रहे हैं पर टेबल। सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पर टेबल, इसका सेंस तब आता है जब हमारे पास एक से ज्यादा टेबल हो। आगे जाकर के वी विल बी टेकिंग दैट एग्जांपल आल्सो। अभी हमारे पास एक ही टेबल है, सो इट डजंट मेक अ सेंस। Okay, so this was the sorting of the columns, then the sorting of the data. Sorting of the data. Now see, when I am moving my pointer on these columns, can you see these 3 lines? दिख रही है? This is a sort button. You click on this. 1, 2, 3. Ascending, descending, not sorted. Okay? But this will also not impact your visual. The visual will remain as it is. It is only for the viewing purpose. क्योंकि वो वहां पे हमारे को काम सिर्फ देखना है। टैब्लू नहीं चाहता कि हम डेटा सोर्स में जाएं कुछ भी देखने के लिए, ठीक है जी। Here it is. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन टैब्लू देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम टास्क। एक ही काम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सो नाउ वी हैव सीन द टू अबाउट सॉर्टिंग ऑफ द डेटा।
अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग ऑफ द विजुअल्स की. सो नंबर 1, हाउ टू सॉर्ट द विजुअल. इट इज नोन एज क्विक सॉर्ट. क्या बोलते हैं? Now, let me move my pointer on this numeric axis. Can you see when I'm moving my pointer, 3 lines are appearing? Right? Now click on this. 1, 2, 3. Ascending, descending, not sorted. This is known as quick sort. Okay? Then let's go to the toolbar and you have 2 buttons over here, ascending, descending. Okay? This is known as toolbar sort. This is the quick sort, toolbar sort. Okay. Third, okay, one more thing I have forgotten to highlight. What is this known as? Marks, filter, pages. What is this known as? What is this known as? The bigger rectangulars appearing over here? Shelf. Now just focus on this subcategory, sales category. Just focus on the shape. ये शेप आपको किस चीज की जैसी लगती है? सिलेंड्रिकल. हाँ, और बताओ, किसी चीज से कंपेयर करो. सिलेंड्रिकल सही है. डे टू डे में किस चीज से कंपेयर कर सकते हो? हैं? Capsule. That is what I wanted to hear. Capsule. Absolutely correct. It looks like a capsule. That is a medicine, right? That is why it is known as pill in Tableau. Pill. Pill. इसको हम pill बोलते हैं. ठीक है. हम बात कर रहे थे sorting की. हमने देखा quick sort, okay, toolbar sort, and then comes it as sorting by pill. Okay. I can click on this drop down arrow, and you can see there's an option called sort. Sort data source order, ascending, descending, or I can sort alphabetically in ascending. You can see at the bottom, ascending or descending, or I can sort it on the basis of some field, let's say sum of sales in a ascending or a descending manner, or I can also sort it manually. Let's say I want the copiers to be at the first place, then I want bookcases to be at the second place, something like this. मैं manually भी sort कर सकता हूँ. Then here you will also see the option nested. As of now, we are working with only one field, so it will work same as field. Okay, so further we can take an example of that. Okay. Here it goes. अच्छा, so I can click on this drop down arrow. सब category दिख रहा है. जब इस पे pointer ले गए pill पे, click on the drop down arrow and say sort. ठीक है? So you are getting this dialog box. You can select whatever you want. Is that clear? Yes, sir. So ये जो अभी हमने किया, this is known as sorting by pill. Sorting by pill. Number 4. Let us put the profit into the color. मैंने profit को color में डाला है. Now you can see the bars is appearing in a different color shading. ठीक है? Gradient color, correct. So they are appearing in a different color shading. Darker color indicating the more profit and a lighter color indicating the lesser profit. Let me click on the profit under the marks card and click on the sort button. Tell me, is the visual look sorted? Does the visual look sorted? Yes or no? Who said yes? Yes. Sorted how? Very good. Sorted on the basis of the color. Color पे ध्यान दो ना, आप सिर्फ लेंथ देख रहे हो. Color भी तो देखो ना. Darkest to the lightest. So this is known as sorting by the marks card. मैंने क्या किया? Profit को color में डाला, profit पे click किया और फिर sort button पे किया. This is referred to by as sorting by the marks card. Clear? So can you tell me how many type of sortings I have told you total? 6. Total number of sortings are 6. Let me just revise that. Number 1, sorting of the columns. Correct? Number 2, sorting of the data. This one. So 2 sortings are for the viewing purpose and 4 sortings are for the visual, which are quick sort, toolbar sort, sorting by pill, and sorting by the marks card. Okay.
So again, this could be an interview question. How many type of sortings are there in Tableau? So there are 6 type of sorting, 2 for the data and 4 for the visual. आपको जो convenient लगता है वो use करो. Okay. So this is sorting. Sorting by pills, sorting by marks. The next thing which comes up over here is the next topic which is coming up over here is creating hierarchies. What are these? Let's take an example. Let me display the regional sales. ठीक है, region wise bifurcation of sales हम दिखा रहे हैं. I will also bifurcate it on the basis of the segment and the category and the subcategory. ठीक है जी. सो मैंने एक विजुअल बनाया है जो कि डिस्प्ले कर रहा है रीजन वाइज, सेगमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज सेल्स. ओके. नाउ when I displayed the visual, I have been told that the subcategory wise bifurcation is not required. So I said, okay, no worries, I remove it. I went back and I throwed it out and I again displayed the visual. When I displayed the visual, I have been told, okay, category is also not required. So I said, no worries, I will again do the changes. I went back, I threw the category out and I displayed the visual, which is displaying the region and the segment wise bifurcation of the sales. And then I have been told only region wise bifurcation is okay. So I said, okay, I will make the changes once again. I went back, I threw this out and I displayed it. Region wise bifurcation of the sales. And when I displayed this, I have been told it is better if you add the segment. Right? So I thought, what is this happening? Again and again, I have been asked to make the changes. So don't you think it will be better if somehow I can give this opportunity to the user? User कोई opportunity देते हैं, अपने आप कर लो भाई, जितना खेलना है खेलते रहो. Correct? So let's do it. So here comes into the picture something known as hierarchy. So let's select the fields which I want to be the part of the hierarchy. Category. Using the control click, I can select multiple fields: category, region, segment, subcategory. I have used the control click to select the multiple fields. The sequence of the selection will not make any difference. You can select any field first or second, it will have no impact. You can click on the drop down arrow of any of the selected field and you can see there is an option called hierarchy. Noticeable? And then create hierarchy. It will ask you for the name of the hierarchy. You can give it any name you like. Let's say I will like to give it a name as PD and say okay, and here it goes. Right? So in the sequence, you can see I'm getting category, region, segment, subcategory. But as per my requirement, I want the region to be at the top. So I can simply do the drag and drop. Let me put the region at the top. Then I want the segment, then the category and the subcategory. Okay. Now, rather than putting, and you can also notice PD, just can you focus on the symbol, which looks like an organizational chart. It is the hierarchy symbol. So rather than taking region, segment, category, I will simply take this PD and put it into the rows and see what happens. I'm getting a region over here. But within the fill, you can notice there is a plus sign. Okay, this is a expand button. Segment, category, subcategory. I want to see only segment, only region. Here it is. Now you are getting the region wise bifurcation of the sales. If you move your pointer on this, you can see there is a plus sign, region wise, segment wise. Again, click on this plus sign, region, segment, category. Again, click on the plus sign, region, segment, category, subcategory. I don't want the subcategory. I can click on this. I only want the region. I can click on this. It has become dynamic, right? So this is known as hierarchy. Okay, it is 100% dynamic. You can again expand it, region, segment, category, subcategory, you can do so. At any point of time, if you wanted to remove the hierarchy, you can simply go to this hierarchy, right click on this and say remove hierarchy. The hierarchy will be removed. You can see the plus sign has been removed. It will have no impact to your fields. The fields will remain as it is. Okay, so this is known as hierarchy.
Now, one way of creating hierarchy is this. Now, I will give you one more way of creating the hierarchy. So, whenever you wanted to create the hierarchy, let me take the segment for an example. Simple drag and drop. I will take it and drop it onto the region. I have taken the segment, drop it onto the region. See what happens as soon as I release my mouse. I am getting a create hierarchy directly. Simple drag and drop. You can name it, let's say PD. Enter. The hierarchy has been created. Now you want to add the category to it. You can simply do the drag and drop. The category has been added. You want to add the subcategory, again drag and drop. Here it is. Okay, this is what we are getting over here. And again, if you want, you can remove it. Right click, remove hierarchy. So again, I have given you two ways of creating the hierarchy. Whichever you feel comfortable, you can use that. Now, next, let me take another visual, sales on the basis of the order date. Okay, we have taken the sales on the basis of the order date. What is the visual displaying as of now? Can you tell me? क्या दिखा रहा है ये लाइन चार्ट? क्या कह रहा है? 2017 में बिल्कुल ठीक कह रहे हो. सो ये विजुअल हमें ईयर वाइज सेल्स दिखा रहा है. किस ईयर में कितनी सेल्स हुई है. मगर हमने क्या लिया था? सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर डेट. And if you see it over here, order date, automatically you are getting a plus sign. I have not created any hierarchy. I'm automatically getting this, correct? So remember in Tableau, date field gives you a auto or a default hierarchy. Let me click on this plus sign over here, year wise, quarter wise. Let me click on this plus sign again. So year wise, quarter wise, month wise. Year, quarter, month. But if you will look at this visual, don't you think the visual looks like a broken visual? It is not appearing in a flow. It is appearing in a broken manner, right? And this type of broken visual is referred to as discrete visual. क्या बोलते हैं इसको? Discrete. Remember, discrete means broken. Let's take another example. Once again, taking the sales on the basis of the order date. Let's make it as an entire view. Again, you can say year, quarter, month. Again, it is appearing in a broken manner, right? I can just click on the drop down arrow of the year, and can you see year, quarter, month? And again, you are getting year, quarter, month, right? Now, currently the year is taking from the above one. I will take it from the below one. Year, quarter, month. I will take the month from the, or the year from the below one. And now see year, quarter, month. Now I am getting a visual in a flow, correct? And this type of visual is referred to as a continuous visual. What it is referred to as? Continuous. So this is a continuous visual and this is a discrete. Discrete, broken, continuous in a flow. Okay, all right. So 2 points I have highlighted over here. One is that in Tableau, date fields give you a auto hierarchy. Second is discrete and continuous. All right. The next thing which comes up over here is the grouping. So let me take the sales on the basis of, let's say, region. Let's make it a horizontal bar chart. Let me give slightly more space to it. I will like to display the data name. I am getting the regional sales over here. Okay. Now, assuming I want to display the combined sales for central and south. I want to display the combined sales of central and south. I have selected the central and the south. You can see I am getting a pop-up box in which there is a group icon. I can click on this group icon and here it is. Now the central and south are appearing collectively. Okay, so this is a combined sales for central and south. Okay, and if you will notice, within the list of the fields, you are getting a new field with the name region group. Okay, let me remove this.
I will delete it and I will do it once again. Again, I will take the region. I will take the central using the control click. I will say south, right click over here, and here again you are getting the group. Another way of doing the same thing, same output. Let me throw it out. Let me delete the field. Again, I will take the region, select the center and the south using the control click, group. Again, the same output. Three ways. Let me throw it out. Let me delete the group. And this time, let's take the subcategory. I have taken the subcategory over here. If you want, I can also do the sorting. It will look better. And now I want to display, let's say, the fields, the values related to the stationery like paper, label, etc. I want to create a group of it. So I can go to the subcategory, click on the drop down arrow, say create group. Okay. And I can take arts, labels, paper, let's say envelope. Using the control click, I have selected multiple values and I will say group. You can name it anything, stationery, enter, say apply and OK. You can see you are getting a new field with the name stage subcategory group. Let me take this and throw it out, and here it is. Now you can see paper, label, envelopes are not being displayed individually. It is appearing in a group. And this fourth way of creating a group is known as grouping using the data pane. So this is your data pane. We have used the grouping through the data pane, grouping through data pane. Point clear? Okay. So this is the grouping over here, grouping through the data pane, which we have just done. The next thing which is coming up over here is the auto-generated fields. Now look at the field over here. Category, city, country, customer ID, discount, profit, sales. Can you tell me from where these fields are coming? From where the fields are coming? Tell me. Huh? कहाँ से आई ये fields? Category, customer ID, discount, profit. Data source से आई. Absolutely correct. Now in the data source, do we have any field with the name measure name? Or the measure value or count or longitude, latitude? Do we have these fields in the, do we have these fields? We don't have. So how it is coming? So these are the 5 auto-generated fields. Whenever you work in Tableau, you will be getting these 5 auto-generated fields, which are measure name, measure value, count, longitude, latitude. Okay, now measure name, it will contain the name of all the measures. Can you name the measures over here which you can see? Which are, what are the measures? It's absolutely correct. Discount, profit, quantity, sales, and count is also the measure, although it has been automatically generated. So here it goes. Here it is. So it is giving the total count 9994, the total discount, the total profit, and the total quantity and sales. This is what we are getting over here. Okay. So measure name will contain the name of all the measures. Okay. Then the measure values. Measure value will also display the same thing, but in a graphical manner. Number of records, discount, profit, quantity, sales. Okay. Right. Then count. Count will count the number of records. How many records are there in the data source? 999. Okay. Then you see longitude, latitude. Now, longitude, latitude are used to create maps in Tableau. We will be talking about these in details when we will be creating maps. Okay. So these are the auto-generated fields. Now, what is the utilization of this auto-generated field? So let's try to create a visual. I will like to display the sales on the basis of the order date. Let me make it as an entire view.
And along with the sales, I also want to display the discount and the profit. So discount, profit, and sales I have displayed over here. But if you will notice, don't you think that the sales, discount, and profit has been displayed in a separate plot area? हर एक का एरिया अलग अलग है. Yes, this is for sales, this is for discount, this is for profit. Yes, दोबारा से करके देखें. Sales on the basis of the order date. Let's make it as an entire view. I have taken the profit, I have taken the discount. Again, you can see it is plotted in a separate plot area. But my requirement is I want to display it in a same plot area. I want to display in a same plot area something like this. ऐसा कुछ करना है हमें. ठीक है? So what can we do? We can go to this profit over here, click on this drop down arrow, and you will see there is an option called dual axis. Okay, I can also go to the discount, click on the drop down arrow, and here also you can see there is an option called dual axis. So let's try to put something into the dual axis. For an example, let's take profit. I will like to put the profit into the dual axis, and here it goes. You can see both the sales and the profit has been plotted in the same plot area, where the orange line is indicating the sales and the blue line is indicating the profit. The sales has been plotted against this axis, whereas the profit has been plotted against this axis. Correct? Right. Now let's try to put discount also into the dual axis. So I can click on this drop down, and what do you see? The dual axis option is no more over here. Right? Why? Initially it was there. पहले था. Notice ही नहीं किया. This dual axis. Right. So पहले it was available, but now it is not available. Why? Because नाम ही कह रहा है ना dual axis. Dual means two. So you can have only two things into a same plot area using dual axis. ठीक है? So for this, here we can utilize the auto-generated field. So rather than taking the sales, profit, discount individually, I will like to take the measure values on the basis of the order date. Let's make it as an entire view. Focus carefully. I will take the measure name from here and put it into the color. I don't want the count and I don't want the quantity. If I want, I can put the measure names into the label, and here it goes. I have displayed the sales, profit, and discount in the same plot area utilizing the auto-generated fields. Clear? Shall I repeat? Okay, let's do it once again. So rather than taking the sales, profit, discount individually, I will take the measure values on the basis of the order date, taking the measure names from the columns, putting it into the colors. Let's make it as an entire view. I don't want the count for an example. I can put the measure names into the label, and here it goes. So this time I have displayed four things: sales, profit, quantity, and discount in the same plot area utilizing measure names. Auto-generated field. So this is the utilization of auto-generated fields. I hope it is clear to all. Great. Now, the next thing. आज के लिए इतना बहुत. This is the last topic we will be covering. ठीक है, हमारे पास है छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं. ठीक है, छोटा सा है. So we are talking about discrete versus continuous. Discrete versus continuous. Discrete का मतलब बोलो. हाँ, अलग अलग पार्ट में ब्रोकन, और कंटिन्यूस का मतलब फ्लो में. करेक्ट. Here it is. Discrete highlighted in blue and continuous is highlighted in green. Whatever is discrete, it will be in blue, and whatever is continuous, it will be in green. Now, इधर देखते हैं. ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, see these are the dimensions which are getting highlighted in blue and these are the measures which are getting highlighted in green. बोला था ऐसा? This is not correct. I was lying to you.
ठीक है, मैं झूठ बोल रहा था आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट द थिंग, इट इज नथिंग रिलेटेड टू द डायमेंशन एंड मेजर, इट इज रिलेटेड टू द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट मी टेक द सेल्स on the basis of the order date. Okay, let's make it as an entire view. Now, order date is the dimension, it is appearing in blue, and this is the measure, it is appearing in green. But what I will do, I can click on this drop down arrow and I will make it as, see, it is discrete, I will make it as continuous and it is appearing in green color. उस समय मेरे को सिर्फ बाइफरकेट करना था कि ये डायमेंशन है, ये मेजर है, इसलिए मैंने ग्रीन ब्लू, बट एक्चुअली में ग्रीन ब्लू जो है वो डायमेंशन और मेजर नहीं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बताता है, राइट? सो डिस्क्रीट ब्लू, कंटिन्यूअस ग्रीन. नेक्स्ट, discrete fields give separate color and continuous field give gradient color. Example, let me take the sales on the basis of the subcategory and I will like to put some discrete field, for an example category, into the color. तो आप क्या देख रहे हो, that every category is highlighted in a separate color. Furniture blue, office supplies orange, technology red. ठीक है, कुछ भी डाल लेते हैं discrete field, suppose region डाल देते हैं. So you can see every region is highlighted in a separate color. Clear hai? Right. However, if we put a continuous field, for an example profit, into the color, what are we getting? We are getting the color shading, that is the gradient color. Okay, perfect. Then filtering on discrete will give you an exact value to filter, and filtering on continuous will give you a range to filter. So let me put a discrete field into the filter. Here it goes, and here it is. You can select whatever you want, right? Individually. फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, तीनों अलग अलग मिल रहे हैं, जो चाहिए वो रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं. ओके, लेट मी let me put profit into the filters and see what happens. Now I am getting a range where the profit is between the specified range, right? Like this, whatever it is. So discrete fields give you exact value to filter and continuous give you a range to filter. Okay, next, discrete field in maps gives color dot and the continuous field gives a filled map. So let's take an example of that. And don't worry how I created the map and all, we will be talking about this later. So you can see I'm getting a US map over here. And let me try to put the let me put the region into the color. And can you notice we are getting a different color bubbles over here. Each color bubble is representing a particular region, right? Like east, south, central, west. So discrete field in map gives separate color, whereas continuous field, for an example, sales into the color, will give you a filled map or the gradient color. ठीक है? Yeah. Right? So discrete versus continuous. एक बार quick review करते हैं. Discrete blue, continuous green. Discrete field separate color, continuous fields gradient color. Filtering on discrete exact value, filtering on continuous range. Discrete field in maps color dot, continuous field in map filled map or a gradient colors, right? So as of now the objective was just to compare discrete and continuous. Okay, and here comes your second assignment, which says display year wise sales, discount, profit and quantity using measure names. अभी किया है हमने ये, already solved for you. Next, display sales using the hierarchy for region, segment, category, subcategory. अभी बनाई थी hierarchy, it has also been done. Create a horizontal bar chart to represent subcategory sales
all the subcategory related subcategories like paper, label, etc. should be grouped as stationery. So ये भी हम लोग कर चुके हैं. Stationery group कहाँ गया भाई? Here it is. Output आपके सामने है. Then represent subcategory wise profit in a graphical manner arranged in a descending order of the profit. Subcategory wise profit. So let me take the profit on the basis of the subcategory. Let's make it as an entire view and this. Arrange in a descending manner. This is the output. अगर थोड़ा और सुंदर बनाना है इसको तो प्रॉफिट उठा करके कलर में डाल दो. ज्यादा चाहिए लेबल दिखा दो ना. काफी हो गए आपके 4 असाइनमेंट. ठीक है. सो हाउ मच टाइम विल इट टेक? असाइनमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? Here it is. असाइनमेंट हो जाएंगे यस और नो? वो मैंने किए हैं, आपको करने हैं. ठीक है. सो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? अगले सेशन में हम यू कैन शो मी योर असाइनमेंट. किसी भी असाइनमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो हम उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. बट डूइंग इज इंपॉर्टेंट. अब आप कहोगे हम सेव तो कर नहीं सकते तो दिखाएंगे कैसे, है ना? तो इसके लिए आप क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लोगे. स्क्रीनशॉट लोगे या तो वर्ड फाइल में रख लो या एक पीपीटी बना लो, अगले सेशन में दिखा देना. ठीक है. सो वी कैन डिस्कस इट. ऑलराइट. अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है एडिंग पैरामीटर्स, जिसको हम अगले सेशन में करेंगे. हैप्पी? Before I wind up the today's session, I wanted to know how do you find the today's session? How was it? हाँ, ठीक ठाक समझ में आया जो समझाना चाहते हैं? लैंग्वेज वाज फाइन. मेरे को सिर्फ 2 ही आती हैं, इंग्लिश हिंदी, तो मिक्स करके हम डिलीवर कर पाते हैं. ठीक है. ऑल ओके. इंटेंशन बड़ी प्योर है. हम सब लोग एज अ टीम काम करेंगे और इस टॉपिक पे एक्सपर्टीज लेने की कोशिश करेंगे. राइट? एंजॉय द टॉपिक. मोर यू एंजॉय, मोर यू लर्न. Thank you very much. Bye bye. Take care. Thanks.